अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म को स्टडी करेंगे इन फिलोसफी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है एंड इनको कलेक्टिवली न्यू पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है बिकॉज इट्स अ न्यू फील्ड, सो इट्स अ न्यू पॉजिटिविज्म। इट्स एक्चुअली अ मूवमेंट जो कि वेस्टर्न फिलोसफी में चली, और इसका सेंट्रल थीसिस या मेन आइडिया क्या था? इट वॉज द वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, कि वेरीफाई करना है, ठीक है, जिसको हम वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरियन ऑफ मीनिंग भी कहते हैं। ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी, इसका मतलब ये था, या इसका एम्फोसिस इसका ये था कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं या ओनली स्टेटमेंट्स वेरीफाइबल थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल प्रूफ और मीनिंगफुल, ठीक है, वही स्टेटमेंट्स जो कि वेरीफाई हम जिसको कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से या लॉजिकल प्रूफ से, सिर्फ वो मीनिंगफुल हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वेइंग ट्रूथ, वैल्यू, इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल कंटेंट। दिस मूवमेंट या दिस फिलोसफी वाज स्टार्टेड इन 1920s। ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने एक बर्लिन सर्कल बनाया, वियना सर्कल बनाया, और इन दोनों सिटीज में दे प्रोपाउंड द आइडियाज ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इसी तरह ये जो मूवमेंट थी, ये फ्लरिश हुई डिफरेंट यूरोपियन सेंटर्स में 1930s में। The movement sought to prevent confusion rooted in unclear language and unverifiable claims by converting philosophy into scientific philosophy. कहा जाता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज था ना, उसी को क्योंकि इससे पहले जो फिलोसफी थी, जो मेटाफिजिक्स थी, वो साइंटिफिक नहीं थी। आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो वो जो मेटाफिजिक्स थी सारी, जो प्रीवियस नॉलेज था सारा, उसको ये डिस्कार्ड करते हैं, उसको कहते हैं कि ये मिस इंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है या मीनिंगलेस है। सो ओनली द साइंटिफिक फिलोसफी या साइंटिफिक नॉलेज इज द फैक्चुअल नॉलेज, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंगली। एंड इसको एम्पेरिकल नॉलेज भी कहा जाता है बिकॉज एम्पेरिसिज्म इज समथिंग जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। सो दीज काइंड ऑफ नॉलेजेस जो है ना, ये इनको लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है इनको एक्चुअल नॉलेज समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो मूवमेंट थी, ये थोड़ा सा माइल्ड वेरिएंट की तरफ शिफ्ट कर गई। Logical empiricism, led mainly by Karl Hempel, during the rise of Nazism, or it had immigrated into the United States. In the ensuing years, movement के जो central premises थे, it was still unresolved. They were heavily criticized by leading philosophers, ठीक है, particularly Willard van Orman and Karl Popper, and even within the movement itself, ठीक है, सब इसको criticize करने लगे by Hempel. The 1962 publication of Thomas Kuhn, Landmark उनकी बुक थी, Landmark writing थी उनकी, which named the structure of scientific revolutions, dramatically shifted academic philosophy's focus. So in 1967, philosopher John Passmore pronounced logical positivism dead, or as dead as a philosophical movement ever becomes. Logical positivism जो थी वो डिफर करती है डिफरेंट जो अर्लियर फॉर्म्स थी एम्पिरिसिज्म की या पॉजिटिविज्म की, जिस तरह डेविड ह्यूम ने बताया, ठीक है, इन होल्डिंग दैट द अल्टीमेट बेसिस ऑफ नॉलेज रेस्ट अपॉन पब्लिक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन or confirmation rather than upon personal experience. It differs from the philosophies of Auguste Comte and John Stuart Mill in holding the metaphysical doctrines are not false but meaningless. ठीक है, metaphysical जो doctrines है वो false नहीं है लेकिन meaningless है. That the great answerable questions about substance, causality, freedom, and God are unanswerable just because they are not genuine questions at all. Okay? कि ये वाली जो सारी चीज़ें substance, causality, freedom, God, ये unanswerable because they are not genuine questions at all. This
Last is a thesis about language, not about nature, and is based upon a general account of meaning and a meaningless. All genuine philosophy, according to the group that come to be called the Vienna Circle, is a critique of language. जो भी genuine philosophy थी वो क्या है? Critique of language है. And its result is to show the unity of science. That all genuine knowledge about nature can be expressed in a single language common to all sciences. एक single language होगी जो कि सब sciences की common होगी language. अब वियना सर्कल में क्या है कि उसका ओरिजिन डिस्कशन का क्या है ना, फिजिक्स में और मैथमेटिशियंस में बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 जो भी थे उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो था कि उनका कंक्लूजन, जनरल कंक्लूजन वाज रीच्ड दैट द एम्पिरिसिज्म जो कि मिल का और मैच का था, it was inadequate. Why it was inadequate? Because it failed to explain mathematical and logical truths, and because it did not account satisfactorily for the apparently a priori element in natural science. अब हम आगे बात करेंगे verifiability principle की. ये भी philosophical doctrine है, fundamental to the school of logical positivism, holding that a statement is meaningful only if it's either empirical verifiable or else tautological. ठीक है, tautological क्या है कि its truth rises entirely from the meanings of its terms. अपने ही अंदर से उसका मतलब निकले. This is tautology. Thus, the principles discard as meaningless the metaphysical statements of traditional philosophy, as well as other kinds of statements such as ethical, aesthetic, or religious principles. Asserted as true, but neither tautological nor known from experience. Such statements may have meaning in the sense of being able to influence feelings, beliefs, or conduct, but not in the sense of being true or false, and hence of imparting knowledge. According to the principle, a non-tautological statement has meaning only if some set of observable conditions is relevant to determining its truth or falsity. So stated, it reflects the view that meaning of a statement is the set of conditions under which it would be true. Now there comes a disagreement among positivists. It has arisen over the kinds of conditions that qualify as observable for purposes of verification, and of course the exact nature of their relevance to the truth or falsity of statements. On the other hand, जो Karl Popper थे, he was more emphasized on the key feature of scientific hypothesis, which is precisely their falsifiability. एक चीज को हम falsify करें, यहाँ पे हम logical positivism में वेरीफाइबिलिटी की बात करें कि एक चीज वेरीफाई हो सकती है या नहीं, ठीक है. और कार्ल पॉपर उसको फॉल्सिफाई पे लेके जाते थे कि इफ द हाइपोथेसिस इज इफ यू कैन मेक इट फॉल्सिफाई, देन आप कह सकते हैं कि वो फॉल्स हो सके. द थ्योरी या जो हाइपोथेसिस फॉल्स नहीं हो सकता, ओनली दैट इज the one जो कि आप कह सकते हैं कि it is science, pure science. So let's sum it up. Logical positivism क्या है? It's a form of empiricism. Empiricism क्या होता है कि आप sensory experience and knowledge gain करते हैं. So it's only source of information from which you can gain experience. Central claims उसके दो ही हैं logical positivism में. One is the knowledge empiricism, which is कि आप सेंसेस से डेटा गेन कर और नॉलेज गेन करें सेंसेस से. द अदर वन इज द वेरीफाइबिलिटी थ्योरी ऑफ मीनिंग. ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है कि दिस थ्योरी स्टेट्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स वेरीफाइबिलिटी. एज दिस इज एन एम्पिरिसिस्ट थ्योरी, वेरिफिकेशन मस्ट बी इनफ ऑब्जर्वेशन. So what does logical positivism suggest? Literature, ethics, theology, metaphysics, and other subjects where the truth or falsity of the propositions cannot be verified are meaningless. All the statements which can't be tested
are meaningless. The only useful contribution of the philosopher is logical analysis, and the statements which can be tested are only meaningful statements. Criticism भी logical positivism पे होता है. Does the verifiability theory of meaning refute itself? The statement, the meaning of a proposition consists in its method of verification, is not true by definition, nor is it able to be verified through observation. So, ये इस पे criticism था. This is all about logical positivism. इस पे क्वेश्चन एक आ जाता है, कुछ philosophers के नाम आपने बताने, further reading आप इस पे कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन हो, do ask me. Thank you so much. Take care. Bye bye.